aspiring to join the National Defense Academy. Uh, Today, our session is going to be about discussing um, the 2021 NDA, and I hope I'm quite audible and the visuals are clear. So, we are going to discuss today about the upcoming exams of NDA, the first NDA of 2021. We would be discussing the strategies, how to prepare for it. But today, what we are going to do is I'm going to give you an overview, an idea about what um, the NDA exam is all about. I'm Amit Tripathi, and I've been recommended by SSB twice for Air Force, Army, and Navy, and so on. And I have been a mentoring defense aspirant for quite some time now, and I've had a very successful career in providing the defense forces with exceptional officers. And I would be sharing my expertise and my experiences with you guys. Okay, so let's start directly, and we'll discuss about what the NDA 2021 you are supposed to be expecting from it. Okay. Okay. Fine. So today's topic is that NDA 1 2021. Okay. So we'll be discussing about the eligibility, uh, the different dates of notification, so on, the syllabus, and the procedure of NDA. What NDA, if you want to join the National Defense Academy, Khadakwasla, what is the procedure that you have to go through, and the things that you need to keep in your mind while preparing for the examination. Fine. So the key points are that we all know that NDA, that is an academy in Khadakwasla, and the exam being conducted by Union Public Service Commission. Okay, so UPSC conducting this exam itself um, stresses the importance of NDA examination in the uh, in the structure of the Indian Army. For the defense services, you have to be an unmarried male. Unfortunately, females are not eligible for NDA examination. If you are a female and you still aspire to join the defense forces, you'll have to graduate, and then through CDS and AFCAT examination, you have the option of getting into the defense services. Okay, the examination is offline. Okay, and it's not going to change anytime soon. Okay, the duration of the examination is 5 hours. That is 2.5 and 2.5 hours. Two examination, two papers are conducted. One is for mathematics, and another one is general ability test, in which the English section is included. In the coming slide, we'll be discussing in details what these papers are, their syllabus, and what things you need to stress on while preparing for the examination. Okay, the notification would be out by the end of this year, and the last date would be in January, by mid of January, 19th January 2021. Okay, and the examination would be conducted on 18th April 2021. Okay, so there are few things that are very important, which might be a watershed for those candidates who are aspiring to be in the defense services, who are right now pursuing their 12th standard. Okay? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं का एग्जाम दे रहे होते हैं, जो 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं, और वो एनडीए 1 को टारगेट नहीं करते हैं, वो एनडीए 2 को टारगेट करते हैं, राइट? ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक एवर अगेन. Okay, NDA 1 is completely in your margin. You can easily prepare for it, and just don't make that an excuse that you're very tired and you want immediately after the 12th board exams are over in March, you need a break, and that's why uh, you don't feel like getting involved in a competitive exam immediately after the stressful time of your 12th board examination. I am saying that it is a very positive factor for you guys. Okay, you have already put in all your efforts for your 12th examination. You are very fresh. Your curriculum, your timetable, your study patterns is already set. Don't get out of it. Do not take break.
Okay, take 1 day off, and from next day continue the same pattern that you have been following for your 12th examination preparation. And sorry. And in the coming slide, I'll just show you with the cutoff and the pattern that previous year, which has been continuing. It is not at all difficult for you guys to clear the written examination. Written examination is not the problem. Okay, you need to understand the intention of the examination. The intention of taking NDA written examination is to shortlist those students who can appear for SSB, right? And then those students will go for SSB, and SSB is going to decide whether you'll join the academy or not. Okay, so unlike other examination where written examination is the most important part of the examination, uh, this is not the case. Okay, in rest of the examination, even if there is a process of interview, the interview marks are quite less. Here, the NDA is for 900 marks, the SSB is for 900 marks. There is equal importance. But NDA gets you to SSB. No matter how much you score in NDA, it is not going to impact your selection process in SSB. You might top the NDA examination, written examination, and you might get screened out. That is on day one of SSB, you might be thrown out of it, of the selection process, and your journey ends, and you need to start again. Another point is NDA की age limit काफी जल्दी खत्म हो जाती है. You need to be 19 and a half by the time you join the academy. Okay, so you need to be very specific about the date, month, and year of birth, minimum and maximum. Okay, many students make this very careless mistake that they do not focus upon the eligibility criteria, and by the time they are going for the written examination they realize that they are not even eligible and they have overshot the age, because कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 19.5 साल का एज फैक्टर दिमाग में लेकर चलते हैं और वो एग्जाम के डेट पे उस एज को लगा लेते हैं. इट इज नॉट दैट वे. सो बी वेरी स्पेसिफिक कि जो आपका डेट, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 1 या 2 दिन से आउट ऑफ एलिजिबिलिटी गए हैं. ओके, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अगर आप 1 दिन से भी एलिजिबिलिटी के बाहर हैं तो आप एलिजिबल नहीं है. दे विल नॉट कंसिडर यू अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो बिल्कुल भी ये मत सोचो 1 दिन की बात है, नहीं, वो दे विल गो बाय द बुक. ओके, इफ इट इज ऑन 2nd January 2003 that then your date of birth and year of birth, then it cannot be 3rd January also, right? So keep that thing in mind before you start your preparation, that you are eligible for the examination, upcoming examination. Another thing is 6 months prior seniority in defense forces matter a lot. अगर आप NDA 1 क्लियर कर जाएंगे, आप 6 मंथ्स की सीनियोरिटी में रहेंगे, आप एकेडमी पहले ज्वाइन कर पाएंगे. ठीक है, जो कि आगे जाके आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. ठीक है, और इसकी जरूरत भी नहीं है. आई हैव myself had an institute, I have mentored many students, and trust me, मैं 22 मार्च को NDA आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता था, 24 मार्च को मैं बैच चालू करता था. जो बच्चे ज्वाइन करते थे सितंबर के लिए, ठीक है, बट मैं अप्रैल में ही उनको एग्जाम दिलवाता था. 1 महीने का मैं क्रैश कोर्स की तरह रन करवाता था, और कई बच्चे ट्रस्ट मी यूज्ड टू क्लियर द NDA, जो कि सोच भी नहीं रहे थे कि अप्रैल वाला देना भी है, वो लोग क्लियर कर लेते थे. तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी आपके पास बच जाता है. ठीक है, यू गेट मोर ऑप्शंस आल्सो, and when you get recommended you get a seniority also. Okay, so do keep those things in mind. Now the qualification here, if you are aspiring for army wing, you just need to get 12th pass. Okay, it doesn't matter if you had physics or maths or not. I've seen many students who have given up on their ambition to join the defense forces just because they thought कि maths background होना चाहिए. ठीक है, नहीं, अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ्स बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट द पेपर वुड बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू. तो देयर यू विल हैव टू deal with the mathematics section also. Okay, and physics also, but otherwise you're eligible for it. As far as Navy and Air Force is concerned, yes, you need to be a 12th pass with physics and maths as your subject. Okay, but that is not the case with Army. So anyone who is from commerce background, bio background, any other background, okay, if you are confident in your mathematics or you can work hard on it, okay, or it has not been your weak subject, out of interest you have taken the other options, then you are completely eligible and you can very easily crack this examination. Now this year the vacancies would be for Army it is going to be 208, for Navy 42, for Indian Air Force 120, and the Indian Naval Academy Force 48. Many of the students do ask me, sir, what is the difference between why it is NDA/NA Naval Academy and all? Because through NDA examination, because Navy is a very tech savvy sector, so they do hire cadets
for engineering and technical backgrounds. Okay, so those of them would go directly to the Naval Academy. Okay, and rest of you would be joining the Navy as an officer. Okay, in the combat format. Okay, so 418, lot of vacancies are there, and it has been consistent in the previous years also. Okay, so vacancy is not a problem. Next, we'll just discuss about the basics of the examination. Okay, the examination, as I said, it will be 2.5 hour paper. Two paper would be conducted. Okay, first you'll have mathematics paper that will be for 2.5 hours with 120 questions. Okay, and total marks would be 300. So approximately 2.5 marks for each question, and there is a negative marking, and you need to be very calculative about it. Okay, if you attempt a question that's wrong, okay, so 1/3 marks, that's minus 0.83 marks would be deducted. Okay, so you need to plan your number of attempts questions, knowing, keeping in mind the cutoff that it might go. Okay, accordingly आपकी जो accuracy है उसको तो maximum रखना ही है, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट को भी मिनिमम एक लेवल रखना है कि इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं. ठीक है, सो अगर ये 120 का है तो यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस. ओके, एंड इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. ओके, next, your general ability test, it would be again for 2.5 hours. It has two sections. One, it would be English, that would be for 200 marks, and then the GS section is there, that would be for 400 marks. Okay, for each correct question you will get 4 marks, and for each wrong one, 1.33 marks would be deducted. Both the paper would be both bilingual, Hindi and English. Of course, by common sense, the English paper would be exclusively in English, but rest of the paper would be bilingual, right? Now what you need to keep in mind is that when you're going for GS paper also, you need to prioritize. Okay, especially those who are appearing for 12th also and will give NDA also. ठीक है, तो आपका जो 12th तक में आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आपकी आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, बायो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका जनरल साइंस सब्जेक्ट है, आपको वो ही पार करवा देगा सिर्फ. ठीक है, मैक्सिमम अराउंड 50% जीएस से ही करीबन आपका जो जनरल साइंस है उसी से पेपर आ जाता है. ओके, बाकी आपकी इकोनॉमी है, उसमें प्लानिंग सिर्फ है, टॉपिक बहुत छोटा है, एक दिन का टॉपिक है. ओके, हिस्ट्री इज देयर, यू हैव स्टिल रेड हिस्ट्री बट यू कैन रिवाइज इट वेरी इंटेंसली. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि किस तरीके से पेपर आ रहा है. डोंट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द मेंटालिटी कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा. ओके, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, प्लीज रेस्पेक्ट द एग्जामिनेशन, प्लीज अंडरस्टैंड इट. ओके, इट वोंट हैपन. दैट वे you get a general idea about what kind of questions are being asked. Okay, because if you talk about physics, for instance, okay, less number of questions would be asked, that would be on numerical basis, but more on the applied physics. Okay, application based question would be asked from general day to day activities that you might be doing. Okay, so keep that in mind while you're studying. Now in mathematics, the course would have algebra, matrix and determinant, trigonometry, analytical geometry of 2 and 3 dimensions. Differential calculus is one of the most important topics. Okay, you need to put a lot of stress on differential calculus and integral calculus. Okay, calculus is the most important topic in NDA mathematics, and it makes it different from CDS, where the basic mathematics is being asked, elementary mathematics is being asked, but in NDA examination, quite technical mathematics is expected. Okay, so please go through the syllabus. UPSC is not going to ask anything out of the syllabus, so whatever the topics are given, just stick to those topics, and you need to be very planned in your approach while preparing for the examination. And trust me when I tell you this, अगर आपका इंडिया क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें गलती सिर्फ आपकी है. आप ये नहीं कह सकते हैं पेपर डिफिकल्ट था सर, मैंने मेहनत तो करी थी सर, हुआ नहीं. आप खुद को झूठ बोल रहे हैं. ठीक है, एनडीए मैं बता रहा हूँ आपको, आगे जाकर आप देखेंगे कट ऑफ काफी कम जाता है, क्योंकि इंटेंशन क्या है, इंटेंशन आपको यहाँ से पिक करके एकेडमी डालने का नहीं है. इंटेंशन है एवरेज माइंड स्टूडेंट को लाना, जो कि एसएसबी के थ्रू प्रोसेस में जाएगा, जहां 5 दिन रख के वो लोग आपका साइकोलॉजिकली देखेंगे कि आप डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ये एक्सक्यूज कभी मत बोलिएगा, किसी को मत बोलिएगा. ठीक है, कि मैंने तैयारी करी थी लेकिन मेरा नहीं हुआ, नहीं है. ठीक है, अगर आपने तैयारी करी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर ना हो. ओके, बिकॉज द कट ऑफ काफी कम जाती है, 33% पे तो कट ऑफ निकल जाती है उसकी. ओके, सो यू कैन नॉट ब्लेम दैट. नाउ जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स पे सबसे ज्यादा आपको फोकस देना है. ठीक है,
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का करीबन इसमें से ही आ जाता है आपका. Then you need to focus a lot on chemistry. Okay, bio also decent questions are asked. Okay, geography is quite important here. Okay, and history is also important. Whereas the polity and economics you can have, don't put it as your priority. Don't put a lot of time. Okay, आप जब भी एग्जाम के लिए जाएं कोशिश करें 100% पेपर या कोर्स को कवर करने का, लेकिन एक कॉमन सेंस और एक स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट प्रिपरेशन की भी जरूरत होती है. जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस करिए, उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करिए. जहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं वहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट मत करिए. ठीक है. Now, as I was saying, now look at this. If you see the last 10-year cutoff for NDA 1 and 2, out of 900, 263, 193 in 2010, 290, 253, 333, 348. At no point of time has it even touched 350 marks out of 900. अगर आप 300 को एवरेज मान के चलेंगे तो आपका इतना कम 30% पे तो आपको कॉल कर रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. लेकिन चीजों को बहुत ही बैलेंस्ड वे में प्रिपेयर करिएगा. ये नहीं कि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है कि सर मैं तो मैथ्स में मैक्सिमम नंबर ले आऊंगा. सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, आपको जीएस में भी करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पे भी वर्क करना पड़ेगा कि एवरेज मार्क्स आपके सब में आने चाहिए और आराम से आपका क्लियर हो. सेकेंड पॉइंट इसके बाद मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश करिए जितना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं उतना करिए. ट्राई फॉर ओवर 500 मार्क्स. ओके, इन दिस एग्जामिनेशन. रीजन बीइंग कि एसएसबी में आप रिकमेंड जब हो जाएंगे तो एसएसबी के भी मार्क्स होते हैं. एट द एंड व्हेन द मेरिट लिस्ट is made, the marks of your written and SSB are combined and then the merit list is being made. Okay, unlike CDS NDA में कई बच्चे रिटर्न क्लियर करके एसएसबी से रिकमेंड होने के बाद भी मेडिकली फिट होकर भी मेरिट आउट हो जाते हैं, और इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है. इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. Okay, especially if that was your last attempt because of the age factor or anything else. और इसमें एज बहुत जल्दी निकलती है, राइट? तो पूरा एफर्ट डालिए प्लीज. इसको टारगेट मत लेकर चलिएगा कि मेरे को 300 लाने या मेरे को 350 लाने. कॉल आ जाएगा. कॉल आने से कुछ नहीं है. आखिरी में मेरिट आउट अगर आप हो गए, इट विल बी वेरी डेवास्टेटिंग. ओके, सो गो गिव एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट एंड ट्राई टू अचीव एज मच मार्क्स as possible. Okay, today's discussion is going to be quite short. I just want you to give you a general idea about what NDA 2021 is going to be like. Okay, what the cutoff has been. इसके बाद मैंने एक और एक cutoff list का भी टेबल बनाया जिसमें SSB के मार्क्स जोड़ के मैंने किए हैं. Okay, for example 2019 342. Okay, with at least 25% marks in each subject. That is what I said. Sectional cutoff is there. So आपको मिनिमम उतना तो करना ही. तो आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं हो सकते हैं और किसी सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप नहीं सिर्फ खींच सकते हो. आपको एवरेज सभी सब्जेक्ट में रखना है और कुछ सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है ताकि आपके कंबाइंड मार्क्स काफी ज्यादा आए. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज. ओके, आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय वाराणसी एंड देहरादून फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग. दैट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके, for some reason I couldn't join the academy. I was in the merit. I was in the top 10 merit, and I had a beautiful experience. Most of my friends are in the defense forces, into flying, and into army and navy also. Okay, so let me tell you this. This is an amazing opportunity, and please do not take it lightly. इस समय प्लीज खुद को ये गलती से मत कहना कि अभी आप बहुत छोटे हो and you have the right to be careless. ठीक है. एनडीए इतना जल्दी दरवाजे बंद करता है कि जो बच्चा स्मार्ट है, जो एम्बिशियस है, जो खुद पे ट्रस्ट करता है, वो ही जाएगा. अनदर पॉइंट इज कि प्लीज अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करिए. कई बार पेरेंट्स ही आपको रीजन देते हैं कि बेटा एनडीए, क्योंकि मेनी ऑफ द पेरेंट्स डोंट वांट देयर वार्ड्स टू गो इनटू एनडीए or defense forces because of they see it in a very narrow way, that threat to life and so on. Defense is an entire world in itself. ठीक है. तो ऐसा नहीं है अगर आप इन्फेंट्री में चले गए तो पूरी जिंदगी आप इन्फेंट्री में रहोगे, या अगर आप पायलट बन गए तो पूरी लाइफ आप पायलट ही रहेंगे. नहीं, आप एनडीए में जाने के बाद वहां ग्रेजुएशन आपको डिग्री मिलेगी. उसके बाद यू कैन गो फॉर एमबीए, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग. आपकी सीट्स रिजर्व होती हैं, आईएम्स में से रिजर्व होती हैं, आईआईटीज में रिजर्व होती हैं. आगे की भी जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि दैट यू विल बी स्टक. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई यू शुड जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे उसके अंदर जाकर. ठीक है. एंड I have put this pic of my student Bishwa because he was my first selection when I started in mentoring students.
okay, from Manipur. And यहाँ पर जो पहला आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें दे आर डूइंग अ जीटीओ टास्क. दूसरे में वैसे सभी में जीटीओ कर रहे हैं, लेकिन हियर दे आर डूइंग फुल ग्रुप टास्क. सेकंड में वो लोग ग्रुप प्लानिंग कर रहे हैं. तीसरे में स्नेक रेस कर रहे हैं, जो कि आर्मी में होता है लेकिन एयरफोर्स एंड नेवी में नहीं होता है. ओके, फाइनली we'll discuss about that what the combined cutoff is. For example, now let's say NDA 2019 342 was the cutoff for written marks and written plus SSB 704. So इसका क्या मतलब है कि अराउंड आपके रिटर्न से ज्यादा कट ऑफ एसएसबी का रहा है. ठीक है, so that means that you need to score around 362 marks, okay, and 342, then you will be getting recommended, but still you might be on merit or you might not be in merit, right? So जितना ज्यादा हो सकते हैं आप रिटर्न में स्कोर करिए, क्योंकि एसएसबी में चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं उतनी. वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ. व्हाट यू आर गोइंग टू बी दैट ओनली. Okay, so you might score well or you might not score that well. Okay, but that is not something that you can very much control. You can prepare. There is always a margin for training yourself. Okay, वो तो आपको करना है. मैं एसएसबी की क्लासेस लूंगा, उसमें I'll tell you in detail how you are supposed to prepare for SSB. And the rest 2018 325 688 again the SSB marks are slightly almost बराबर है, हल्का सा ज्यादा रहता है. 338 705 again 258 624. Okay, so what you get it from here is that SSB का कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रहता है, वरना दोनों ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं. 900 मार्क्स का रिटर्न है, 900 मार्क्स का एसएसबी है. तो अगर आपके 1800 में 704 नंबर आएंगे तो आप जो रिकमेंड होके मेरिट लिस्ट में आप आएंगे. ओके, सो 1800 में से ये रिटर्न प्लस एसएसबी का स्कोर है दैट यू नीड टू अचीव. और ये स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है 1800 में से. लेकिन फिर मैं कहूंगा रिटर्न में चीजें आपके हाथ में है, एसएसबी में काफी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं. ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मेक योर शेड्यूल, मेक योर टाइम टेबल. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिलेबस, प्लान इट अकॉर्डिंगली. सिलेबस का एक एक टॉपिक आप कवर करते जाइए. ठीक है, जीएस और बाकी चीजें हम लोग जब अपना बैच चालू करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग द जीएस, जो कि पोर्शन ऐसा है जैसे कि पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट. और जब मैं करवाता हूँ स्पेसिफिकली व्हेन आई टीच द जीएस पोर्शन, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो मैं कोर्स को फॉलो नहीं करता हूँ. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में अगर प्लानिंग है तो मैं सिर्फ प्लानिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरी इकोनॉमी पढ़ाऊंगा. रीजन बीइंग कि जब आप एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ लेक्चरेट होता है, वहाँ ग्रुप डिस्कशन होते हैं, वहां पे आपको टॉपिक दे सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा था या बुरा था. अब आपको इकोनॉमिक की नॉलेज नहीं है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि पैसा मार्केट में कैसे इफेक्ट करता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, तो आप उन डिस्कशंस में बहुत वैलिड पॉइंट नहीं डाल पाओगे. ठीक है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आपको वहां पे कई जगह आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, इंटरव्यू में टेस्ट होगा, लेक्चरेट में टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन के दौरान टेस्ट होगा, जीटीओ आपसे बात करेगा ड्यूरिंग द टास्क दैट यू वुड बी डूइंग, कमांड टास्क से पहले आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा. ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. और ये एक रीजन था जिसके वजह से मेरे लिए एसएसबी क्लियर करना एक बार नहीं 2 बार उतना मुश्किल नहीं था. वो मेरे लिए सबसे आसान चीज थी जो मैंने अपनी लाइफ में करी है. ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही उस मेंटालिटी में जाने लग गया. I knew what I wanted to be, and I started changing my behavior accordingly. Okay, so keep those things in mind, and this is what your NDA 2021 would look like. Okay, you know the dates, you know what you're expecting uh, from the examination, the syllabus. You don't have any excuses. आपको देना आप दे लो, आपको किसी और को सुनाना आप सुना लो. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एनडीए की अपॉर्चुनिटी कभी मत छोड़िएगा. ठीक है, आप सीडीएस के थ्रू भी डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सीडीएस और एनडीए में बहुत डिफरेंस होगा. वो आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा. एनडीए अपने आप में एक मेजर एकेडमी है, उसकी अपनी लॉबी है. ठीक है, जो भी लोग एनडीए से हैं वो ज्यादा आगे बढ़ते हैं. आपके चीफ्स होते हैं जनरली वो एनडीए के पास आउट्स होते हैं. तो एनडीए इज द क्रेडल, एनडीए इज द सोल ऑफ इंडियन मिलिट्री. सीडीएस इज एन ऑप्शन. Okay, CDS is about filling the vacancies. CDS is about the democratic right of individual wanting and deciding for themselves. ये सारे रीजन है. लेकिन अगर आप किसी भी मिलिट्री पर्सन से पूछेंगे तो उसके लिए डिफेंस का मतलब एनडीए है. ठीक है, तो बहुत प्राउड फील होगा आपको उस एकेडमी में जाने में. कोई कॉलेज उस एकेडमी की वो एलुमनाई उस सेंटिमेंट को मीट नहीं कर सकता है व्हेन यू आर एन एलुमनाई ऑफ एनडीए. ओके, पहली ट्राई सर्विस एकेडमी थी, one of the largest academies in Asia and in the world, in fact.
and it's an amazing journey. Okay, कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ आपको यूनिफॉर्म मिलेगी जो एनडीए आपको सिर्फ दे पाएगा. Okay, so don't compromise with your dream. प्लीज इनसिक्योरिटीज और बाकी चीजें मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको इंस्पायर करूंगा, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा. Okay, I've given many examination, I've cleared many examination, and I've just decided not to compromise with what I want to, the purpose in my life. Okay, and you guys are also a part of my purpose. Okay, I want to spread things, I want to help people achieve their ambitions, achieve their dreams. Specifically, I'm very sensitive about people and students who are aspiring for defense services. And I'm always there to help you out. Any queries, you can just put it on the comment section. I'll get back to you on that. Okay, and we'll be getting to communicate a lot more because of COVID and rest of the things that are going on. Another thing is, don't make this situation an excuse. ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी. जो भी क्राइसिस है, एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है इसने. अगर आप उनमें से नहीं है, प्लीज डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. प्रिपेयर करिए. ठीक है, आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी that you have those resources, you can give those examination with the best of your abilities. Okay, and I'm pretty sure that you will be coming out on the higher ground when the entire process is over. We'll keep in touch, we'll keep talking to each other, and I hope that you have um, understood. My main point is to inspire. ये सारी चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप गूगल कर लो, गूगल मिल जाएगा. The reason I come to you, that I need to speak to you face on face, and that you get to see me, and whatever the issues are. Okay, the only thing that is needed is inspiration. Okay, every student is capable. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते थे जो हिंदी मीडियम से होते थे और उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था, और they were the one who actually topped this examination. Okay, they have overperformed everyone else just because they needed someone to tell them that I trust you. Okay, and that is what my job is here. Okay, to empower you, to help you to realize your potential, to realize your strength. I'm not here to spoon feed you. I'm never going to make the path for you. I'm going to help you create a path for yourself. Okay, so start your preparation immediately. Don't wait for another day. Okay, make your timetable today. 6 महीने बस ईमानदारी से अपनी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी की बात है. एक सपना सच हो जाएगा. 6 महीने ईमानदार, किसी के लिए नहीं पढ़ना है, मम्मी के लिए नहीं, पापा के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए करना है. क्योंकि उस एकेडमी में, उस यूनिफॉर्म में आपको अपना नाम देखना है. ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कॉलेज में जाऊं जहां पे मेरा नाम जेंटलमैन कैडेट से स्टार्ट हो. ओके, सो डोंट गिव अप ऑन दैट ड्रीम. Make it as real as possible. Dream about it day and night, and I'm pretty sure that you'll be able to achieve it. And I will be all the way uh, with you while you are aspiring for your ambition. Okay, so good night, everyone, and Jai Hind.